it's not kept them waiting. Okay, yeah, so let me start from what we did last time. Uh, yes, we started with sequences, we defined subsequence, and then we also saw that what is a connection of convergence of subsequence with the sequence. And then I defined what do you mean by a non-decreasing sequence and a bounded sequence. So the meaning of non-decreasing sequence is if an is less than equals to an plus 1 for all n, then the sequence is said to be non-decreasing, and this was equivalent to check in the questions an plus 1 minus an is greater than equals to 0. And the meaning of bounded was that if there exists a number m, capital M, such that an is less than equals to m for all n. So this notation is for all, right? This I explained to you last time, that if we are able to find a number so that every term of the sequence, all the terms of the sequence are less than or equal to that number, so then we say that sequence is bounded from above. There is a general definition of bounded also, which includes bounded from below and bounded from above. So here I'm specifically mentioning bounded from above. Yes, I will be coming to the examples because this is just what I defined last time, bounded from above. So now we will have examples of these kind of sequences. And if you remember, I think I gave you one example also. For example, if you take an is 1 by n, right? So the sequence is 1 by n, and we know that since n is always greater than equals to 1, because n, you know, is a natural number, so 1 by n, the reciprocal of this is always going to be less than equals to 1. So that's very easy to see. If n is greater than equals to 1, which is so, therefore 1 by n is less than equals to 1. This implies this sequence an is 1 by n is bounded from above. So because this statement, according to this statement, it said if there exists, एक भी आपको अगर ऐसा नंबर मिल जाता है कि आपके सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस नंबर से कम हैं, then we say that sequence is bounded from above, right? So now before going for the more applications, I'll first before more examples, I'll give you another example. Say you have this sequence n minus 1 by n. This is also, you can all see that whatever be the value of n, so n minus 1 is always less than n, right? Everybody can see that n minus 1 is always going to be strictly less than n. This implies n minus 1 by n is always less than 1 for all values of n. So therefore this sequence is also bounded. So this sequence n minus n by n is also bounded from above, right? So this is the second example. One more example if I give you. So say you take an is just n. So then you know this is not bounded from above. It's easy to see, right? It is not bounded from above because as you can see, there is no number which is going to be less than this number, which is going to be greater than equal to all such numbers. If you tell me, okay, 10 raised to power 6 is the upper bound, or we can find that, so then if this, you claim that this is a very big number, or even if you take say 10 raised to power 60, if you take this is a very big number, all the terms of the sequence, this is the term of the sequence, is less than that, then this is incorrect because the next term of the sequence is going to be definitely bigger than that, because it's continuously increasing. As you can see, this is n, right? It's rising like 1 2 3 4 5, it's continuously increasing, so you cannot really find the upper bound for that because the graph is like that, it is monotonically increasing. So this kind of sequences are generally not bounded from above.
So as such, I would say there is no theory or there is no well-defined technique which will help us to identify whether a sequence will be bounded from above or below. It is just you have to do the calculations like this. Just like here, by looking at it, I could figure out that this should satisfy, that I'm clearly seeing an upper bound for this. So therefore, this is bounded from above. And similarly, we had this example. We will have more examples when we will be doing specific questions, that when we will connect the boundedness with convergence, then we will be doing the specific questions. So these are the three examples. One example was, two examples were bounded from above, and one example of the sequence which is not bounded from above. So now let's elaborate the same definition. So I just told you that less than equals to m. So if such number exists, so this m is called upper bound. It should be clear why it is called upper bound, because आपका sequence bounded from above है, तो उसकी सारी terms उस number से कम हैं. Therefore, yes, n should start from 1. N should start from 1. By default, n is natural number, so n should start from 1. So m is called, what I was telling, this capital M is called upper bound of the sequence. That means अगर bounded from above है तो उसका upper bound exist करेगा. So that is capital M. Now I'll go back to the same example. Say you have 1 by n. So all of us knows that that 1 by n is less than equals to 1, and at the same time this is also right to write 1 by n is less than equals to 2, 1 by n is less than equals to 3 for all n. This is, I'm writing for all n, all of these expressions. 1 by n is also less than equals to 25, 1 by n is also less than equals to whatever you write, right, 2.5. So you can give me any number which is greater than 1, so it will satisfy, which is very easy to understand. कि एक बारी जो नंबर्स हैं आपके 1 by n सीक्वेंस की टर्म्स हैं, अगर एक अपर बाउंड आपको मिल गया तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स. ये सारे भी उसके अपर बाउंड्स एक्ट करेंगे, राइट? बिकॉज किसी एक रियल नंबर से छोटा होना मीन्स इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स से छोटा होना, बिकॉज एक नंबर से छोटा होना और उससे जितने भी बड़े नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली उससे भी छोटा होगा. इट्स वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड. इफ a is less than b and b is less than c, then it implies a is less than c. so that means अगर आपको b एक अपर बाउंड मिल गया है तो उससे बड़े जितने भी नंबर्स होंगे, b से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे, they will also act as upper bounds, right? So this is first thing you need to understand, that if a sequence is bounded from above and we are able to find one upper bound of it, actually there exist infinitely many upper bounds. So existence of one upper bound implies existence of infinitely many upper bounds. So that's simple mathematical, it's coming from simple maths relations, everybody can understand that, right? So now what is the conclusion out of this? What is the point which we are trying to convey by this discussion? That we will be interested in actually finding the unique upper bound, because अगर इतने सारे upper bounds हैं, suppose somebody asks you whether this sequence, any sequence which is given to you, say any particular sequence is given to you, and the question asked is, if this sequence bounded from above? So you will be looking for one upper bound, right? And then the next question asked is, what is the upper bound? So nobody can give a unique answer, because as I just explained to you, all of these numbers, all of these, they are acting as upper bounds, because there will be infinitely many upper bounds. So what we need to do, we need to define the concept of least upper bound, because इतने सारे अपर बाउंड्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स हैं, तो उनमें यूनिकनेस के लिए, सो दैट एवरीबडी जस्ट matches at one answer, we are defining the notion of least upper bound. It is in short denoted by LUB. So wherever you see this written LUB, that means least upper bound.
So जितने भी upper bounds existing है उनका जो least value होगा, minimum होगा, that is going to be the least upper bound. So as such there is no formal definition of it. You can say the minimum or the smallest values among the upper bounds of a sequence which is bounded from above. Obviously this talking about upper bounds and least upper bound, this is all going to make sense only when the sequence is bounded from above, right? So the minimum or the smallest values among them is called the least upper bound. Example, the same example you can consider, this an is 1 by n, so I know that 1 by n is less than equals to 1, I know that 1 by n is less than equals to 1.5 also, 1 by n is less than equal to 2 also, 2.5, whatever, as I just explained. So you can say that this one is the least upper bound. So in other words, the better way of looking at it, that how would I know कि यही least upper bound है? So there should be a surety, there should be a confirmation that no number smaller than the least upper bound would act as an upper bound. राइट, तो उससे छोटा कोई भी नंबर उस सीक्वेंस की अपर बाउंड नहीं हो सकता है. सो जैसे 1.5 है तो 1.5 इज जस्ट एन अपर बाउंड, बट दिस इज नॉट अ लीस्ट अपर बाउंड, बिकॉज 1.5 से मेरे पास बहुत सारे छोटे नंबर हैं, 1.4 है, 1.444 है, 1.385 है, सो व्हाटएवर, मैं बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स लिख सकती हूँ, बिकॉज यू नो अब ये 1 है से ये 1.5 है. So 1 और 1.5 के बीच में भी infinitely many numbers are there which are acting as the upper bounds of the same sequence. So 1.5 is cannot be the least upper bound, but I know about 1, that if I go below 1, then there will be a problem. Then I will find the terms of the sequence which will be greater than those numbers. But one thing I am sure कि 1 से बड़ा वहां पे कोई नहीं है. So the 1 is the least upper bound. So ye again I'm explaining you this is just for understanding. The way we'll be doing in questions, there is a better way of calculating the least upper bound, because not for every sequence हम ऐसे just intuitively या imagine करके नहीं बता सकते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है कि यही least upper bound है. This is not the right way of concluding the least upper bound. So the theorem which I'm going to state next after this is going to help in this case, right? So yeah, somebody is saying 0.9. So 0.9 will not act as least upper bound. I am telling you why. Because say this is 0 or 1. Sequence आपका है 1 by n. इसकी सारी terms इस 0 to 1 interval में है. Right? We know that this is converging to 0. The first term is 1. What is the second term? The second term is this. Okay, so yeah, here we can have see it's like all the terms of the sequence should be less than that. I think there is some confusion. Let me just go back to the definition. What I'm saying, only that number will act as upper bound. If you go and look at the definition of this, it should be all, for all n. Sequence की सारी terms उससे छोटी होनी चाहिए. So if somebody is claiming 1, that somebody is claiming 0.9 to be the upper bound, so that is clearly contradicting here. क्योंकि sequence की एक term जो है, the first term है, an is 1 by n. जो first term है, when you put n equals to 1, वो उससे बड़ी हो जाएगी. सीक्वेंस की सारी टर्म्स छोटी होनी चाहिए. तो एक भी टर्म अगर आपको मिल गई जो एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ी है, so that number is not going to be an upper bound. So don't get confused कि आपको एक एक टर्म को देखना है.
जो भी आप कंक्लूजन करोगे वो सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि 1 तो उसकी टर्म ही है, तो 1 से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है, बिकॉज जैसे ही आप 1 से बिलो जाओगे तो वायलेट हो जाएगी, फर्स्ट टर्म वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगी, राइट. So yeah, so graphically a bounded from above sequence is going to look like कि या तो वो constant sequence ही होगा. Constant sequence is an example. Let me go to the clear page. Yeah, so if you take another trivial example, जैसे जो constant sequence है हमने उसको non decreasing की category में भी include कर लिया था, but ये constant sequence भी है जो bounded sequence की category में आता है. In fact ये bounded from above भी होता है, bounded from below भी होता है. बाउंडेड मीन्स सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसी एक नंबर से कम है, राइट तो वो बाय डिफॉल्ट है. सो इफ आई गिव यू द एग्जांपल एन इज 4, सो दिस 4 इज एक्चुअली द लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं लेस देन इक्वल्स टू 4 हैं, बिकॉज उसकी सारी टर्म्स कांस्टेंट ही है. सो कांस्टेंट सीक्वेंस जो है ट्रिवियल एग्जांपल होता है बाउंडेड फ्रॉम अबव सीक्वेंस का ऑन द सेम नंबर, वही नंबर उसका लीस्ट अपर बाउंड होता है. तो कांस्टेंट सीक्वेंस का ग्राफ हमें पता है ऐसे बनेगा. और अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस हैं तो अगर तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था n का, तो एज यू कैन सी ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये तो नॉट बाउंडेड फ्रॉम अबव का एग्जांपल था. बट वी मे हैव द बिहेवियर लाइक दिस, we may have the behavior like this. In that case we can say this is bounded from above, that even if it is continuously increasing but the magnitudes are becoming smaller, right? So decrease nahi hai, wo decreasing mein nahi ja raha hai, but if you are able to find an upper bound like that, so in that case you will say this is bounded from above. जैसे जो 1 by n है उसका ग्राफ कैसा होता है हमारे पास, 1 by n का ग्राफ इज लाइक दिस. तो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, बाकी टर्म्स ये 0 लाइन है, तो 1 और 0 के बीच में सारी वैल्यूज रहते हैं अगर आप इसको y एक्सिस मान लो. सो जो डिक्रीजिंग हैं ऑब्वियसली वो हमेशा बाउंडेड फ्रॉम अबव होते हैं, विच इज डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि जिस वैल्यू से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुए हैं वो वैल्यू एक्ट्स एज देयर लीस्ट अपर बाउंड, राइट. और बाकी फंक्शन टू फंक्शन जो है वो वेरी करेगा. सो वी विल हैव मोर एग्जांपल्स एंड आई विल ट्राई टू गिव यू ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इन एवरी एग्जांपल सो दैट यू कैन इमेजिन, बट डू नॉट फिक्स कि ऐसा वाला ग्राफ हमेशा बाउंडेड फ्रॉम अबव होता है या इस तरह के फंक्शन, क्योंकि यू नेवर नो हाउ डिफरेंटली डिफरेंट फंक्शंस कैन behave. So yeah, so hold on your doubts till for this topic till the last of the lecture. Let me give you next theorem. So because the question is now हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम नॉन डिक्रीजिंग और ये बाउंडेड क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ थ्योरम. हमारा अल्टीमेट आंसर यू नो इज कन्वर्जेंस को चेक करना है, यू नो दैट. सो वी हैव द नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस theorem. So we have this theorem with us. Right now I'm not going to comment anything on bounded from below. So let's just hold on to that if some of you are having doubts. So non-decreasing sequence theorem, what is the statement? Let's first read the statement and then we will understand it. So the statement says a non-decreasing sequence of real numbers. सो ऑब्वियसली रियल सीक्वेंसेस ही हम पढ़ रहे हैं, डोमेन नेचुरल नंबर्स है बट इनकी वैल्यूज जो हैं, रेंज है इन फंक्शंस की वो रियल नंबर्स हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे अभी नहीं जा रहे हैं. सो ये सारे रियल ही हैं. अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेस, दैट मीन्स ये आधी स्टेटमेंट है अभी, बट इतना पढ़ के ही मुझे पता चल गया है कि ये थ्योरम मुझे कुछ कन्वर्जेंस के बारे में बता रही है, दैट इफ अ सीक्वेंस इज और एंड इट इज एप्लीकेबल टू नॉन डिक्रीजिंग टाइप ऑफ सीक्वेंस, because it is specifically mentioning a non-decreasing sequence of real number converges if and only if it is bounded from above, right? If and only if it is bounded from above. तो ये थ्योरम की इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट है. तो आपको कंडीशन बता रहे हैं कि नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा, if and only if it is bounded from above, right? So that means अगर कोई non decreasing sequence bounded from above है तो वो converge करेगा,
और अगर कोई नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो वो बाउंडेड होगा। इफ एंड ओनली इफ टाइप का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ होता है दैट ए इंप्लाइज बी एंड बी इंप्लाइज ए, कि अगर ए के होने से बी हो रहा है तो बी के होने से भी ए हो रहा है, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मीन द कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। So given is your sequence should be non-decreasing. तो convergence और bounded from above में if and only if relation है, means वो necessary and sufficient है। अगर convergent होगा तो bounded from above होगा, और अगर bounded from above होगा तो convergent होगा। बट हमारे क्वेश्चंस में हमें ऑब्वियसली convergent तो एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो we will never have the information कि sequence convergent है कि नहीं, वही तो हमें फाइंड करना होता है। So most of the times our questions will be like कि हम नॉन डिक्रीजिंग चेक करेंगे कि है कि नहीं, अगर है फिर हम इंप्लाई कर लेंगे कि ठीक है वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम। इफ अवर सीक्वेंस इज नॉन डिक्रीजिंग देन वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम, और जैसे हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे फिर द नेक्स्ट कंडीशन विच नीड्स टू बी वेरीफाइड इज बाउंडेड फ्रॉम अबव। तो जब हम श्योर हो जाएंगे यस इट इज बाउंडेड फ्रॉम अबव, then we will immediately write our answer that this is a convergent sequence. So this is one part of the statement. So let me complete the statement after this. What additional this theorem tells you, let me write that. Yeah, so additionally it's saying that if it converges, it refers to the same sequence, non-decreasing. If it converges, then it converges to least upper bound. So that means ये एडिशनली आपको उसकी लिमिट भी बता रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू जब भी हमें कन्वर्जेंस आंसर करना होता है तो हम जो है कन्वर्जेंस बता के नहीं छोड़ देते हैं, हमें ये भी बताना होता है कन्वर्जेंस टू व्हाट, द सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू व्हाट लिमिट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, राइट? जैसे हमें पता है 1/n गोज टू 0, -1 रेज़ टू पावर n डाइवर्जेंट है। सो अगर कन्वर्जेंट होता है तो ये गोज टू 0 का मतलब, ये एरो से लिखने का मतलब यही होता है कि ये उसकी लिमिट है। तो ये थ्योरम सिर्फ कन्वर्जेंस नहीं बता रही, ये आगे भी बता रही है कि ठीक है अगर वो कन्वर्जेंट होगा, मींस अगर बाउंडेड फ्रॉम अबव हो गया तो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, तो अगर वो सैटिस्फाई हो गया तो इट विल कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। सो वी विल सी इन द क्वेश्चंस डायरेक्टली कि लीस्ट अपर बाउंड कैसे निकाल रहे हैं, राइट? ये हम क्वेश्चंस में करेंगे। And right now I hope the statement of this is clear. This is simple. It is saying अगर एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है आपके पास तो वो तब कन्वर्ज करेगा, तब ही कन्वर्ज करेगा अगर वो बाउंडेड फ्रॉम अबव होगा तो, अदरवाइज इट विल नॉट कन्वर्ज। सो दिस इज द सेम थिंग विच आई जस्ट एक्सप्लेन यू ग्राफिकली हियर। जैसे ये सीक्वेंस है, ये भी क्या है, नॉन डिक्रीजिंग। ऑल ऑफ यू कैन एंटीसिपेट, मीन्स ऑल ऑफ यू कैन वेरी इजिली सी ये तो बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो नॉन डिक्रीजिंग तो ये नहीं है। sorry, this is non decreasing, this is increasing because it satisfies the definition of this is a non decreasing sequence। तो इसके ऊपर हम वो थ्योरम लगा के देख सकते हैं। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ज तभी करेगा अगर ये बाउंडेड फ्रॉम अबव है, बट यू कैन सी बाउंडेड फ्रॉम अबव नहीं है बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट नहीं है, हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है। बट ऑन द अदर हैंड वी विल हैव एग्जांपल्स लाइक दिस, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि ऐसे ग्राफ्स भी होंगे हमारे पास कि वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इट इज नॉन डिक्रीजिंग, इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बट द वे इट इज इंक्रीजिंग इज लाइक उसकी एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है। तो जब उस केस में इस तरह के सीक्वेंस होंगे नॉन डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड फ्रॉम अबव, एज यू कैन सी उसमें मैंने ये लाइन से शो किया है कि ये बाउंडेड फ्रॉम अबव है, so then we can say it is definitely convergent। and remember one thing, ये जो हम ग्राफ बना के एक्सप्लेन करते हैं, these all are for just intuitive understanding, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, these are not the answers। आपको क्वेश्चंस करने के लिए मैथमेटिकली यूज करनी पड़ेंगी डेफिनेशंस नॉन डिक्रीजिंग की और बाउंडेड फ्रॉम अबव की, तब वो प्रूव होता है कन्वर्जेंट, अदरवाइज नहीं होता है। सो ग्राफिकली सिर्फ समझने के लिए है, but actual में we will be doing in the questions, right? So now I'm moving ahead to the application part of this theorem। हम questions पे इसको apply करेंगे, इसका proof हमने नहीं करना है। टाइम टू टाइम जब भी कभी थ्योरम्स आएंगे तो
कभी प्रूफ हमें करने होंगे, कभी प्रूफ हमें नहीं करने होंगे, राइट? Right, somebody is having the doubt, Pranshu. 1 by n least upper bound is 1, but its limit is 0. बेटा 1 by n नॉन डिक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं ना आ रहा. 1 by n पे ये थ्योरम मत लगाओ. 1 by n ठीक है, वो उसका लीस्ट अपर बाउंड 1 है, बट उसकी कन्वर्जेंस 0 को है. तो आप ये मत सोचो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि कन्वर्जिंग टू लीस्ट अपर बाउंड ही होना चाहिए. ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे एप्लीकेबल होगी. आप इसको लगा रहे हो डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे, तो इस तरह के सीक्वेंस पे तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना. तो डोंट अप्लाई दिस नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस थ्योरम ऑन 1 by n, बिकॉज वो है ही नहीं नॉन डिक्रीजिंग, वो तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. तो वहां पे इट्स ये 1 by n का एग्जांपल सिर्फ लीस्ट अपर बाउंड का कंसेप्ट समझाने के लिए था, बट वो नॉन डिक्रीजिंग नहीं है वो सीक्वेंस, तो वी cannot apply that theorem there. So now yeah, we'll be doing questions of it, and for that let me just, so all of you what logged in from another place. Wait a minute, just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Yes, Vivek, are you there? Yes, ma'am. Yeah, can you see the option of polls on your screen? Polls, जो बीच टैब में polls होता है ना? No, ma'am. You're not able to see that? जहाँ पे participants, security और ये सब options होते हैं? Actually, today I am co-host. हाँ, अच्छा ठीक है. Anyways, we'll do that next time. So I just created a question type poll for this lecture, but let's do that next time. वो आज option inactive है. I don't know, some technical reason is there. We'll do that next time. So anyways, that was specific question. So let's do the questions of this now. So the question is, yeah, we do have time yet, right? Yeah. So the first question which we are going to do. So first question में हमें सिर्फ ये बताना है कि sequence non decreasing है और bounded from above है कि नहीं है. Determine if the sequence is non decreasing and bounded from above. So हमें convergence नहीं बतानी है, अभी बता सकते हैं additionally, but अभी के लिए we are not answering about the convergence, right? So we are just determining two things, whether the sequence is non decreasing or it is bounded from above, and both जो भी है हमें दोनों चीजें check करनी है. So write down the first question, 3n plus 1 by n plus 1. So first thing we need to do is हमें check करना है कि ये non decreasing है कि नहीं है. So I explained this to you last time, how to check whether a sequence is non decreasing or not. So the condition to check is this: an plus 1 minus an should be greater than equals to 0 for all n. Do not forget for all n. तो जो भी आप ये claim करोगे तो ये for all n true होना चाहिए, उसमें एक भी point के exception नहीं होने चाहिए. Only then you will term your sequence to be non decreasing. So I'm giving all of you 1 minute. So just give me an answer for this. Solve this and let me know whether this is non decreasing or not. It's very easy to check. Yes, almost all of you are right. This is non decreasing. I can just roughly show you by changing n to n plus 1 in an. You will write an plus 1. So an plus 1 is like this. कि आप ओरिजिनल सीक्वेंस की टर्म में, जनरल टर्म में यू चेंज n to n plus 1. So जैसे आप वो करोगे you will have some expression minus an तो ओरिजिनली यही है 3n plus 1 by n plus 1. So now we just need to do the calculation and see what we get. So this is 3n plus 2, because 3 minus 1 will be 2, n plus 2 minus 3n plus 1 by n plus 1.
this subtraction you will be getting, sorry ये plus है यहाँ पे, sorry I mistakenly wrote that this is plus, so this will be 4. 3n plus 4 by n plus 2 minus 3n plus 1 by n plus 1. So all what you need to do is just do little calculation, so it's easy to see. 3n plus 4 by n plus 2 minus 3n plus 1 by n plus 1. So इसको यहीं पे नहीं छोड़ देना है कि हाँ ये greater than equals to 0 है. You need to mathematically justify. तो थोड़ा सा इसको और further आपको simplify करना पड़ेगा. So multiplying this minus, I'm just doing the elementary calculations, right? So when you will be doing that, so 3n square plus 7n plus 4 minus 3n square minus 7n minus 2. In the denominator, it's fine. You can keep it like that. So you will see that it is 2 by n plus 1, n plus 2. So it's very obvious now this is greater than equals to 0. इसमें कुछ भी negative नहीं है पहली बात, और n हमारा हमेशा natural number ही होता है, so वो भी n plus 1 भी positive है, n plus 2 भी positive है. So this is greater than equals to 0 for all n, क्योंकि n की कोई भी values के लिए ये violate नहीं हो रहा है. So you just need to write that. It implies your an is non-decreasing, right? So this is the answer to the first part, that wow, how this is non-decreasing. Whether this was non-decreasing, तो हमने yes में answer कर दिया. Now we are going to look at whether this is bounded from above or not. So bounded के लिए हमें an plus 1 नहीं चाहिए होता है. Bounded के लिए we just need to look at an only. So what can I do? If I just write it this way, say for example 3n plus 3 minus 2 by n plus 1. So what I have done, 3n plus 1 ko I break down, 1 I have written like 3 minus 2. So this way I will get 3 into n plus 1 minus 2 by n plus 1. So this way 3 minus 2 by n plus 1. So can you tell anything about it? What this an is going to be? This is always 3 minus something positive, right? So this 2 by n plus 1 is always something positive. So 3 से आप कुछ भी subtract कर रहे हो, हमेशा एक positive number. So that is always going to be less than 3, right? Yeah, somebody asked you differentiate करके भी कर सकते हैं. Yeah, that is also a technique for non-decreasing. अगर आप इंक्रीजिंग चेक करना चाहते हो, सो देखो 2-3 टेक्निक्स होती हैं. एक तो ये होता है an plus 1 minus an is greater than equals to 0. एक ये भी होता है, बिकॉज अगर आप रेशियो लोगे और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगा, बिकॉज ये भी आपकी नॉन डिक्रीजिंग की डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड है कि आप ऐसे कर सकते हो. एंड नॉन डिक्रीजिंग मीन्स इंक्रीजिंग, and increasing means roughly it's increasing, and increasing means derivative should be positive. So a and dash लेके अब उसका जो derivative होगा उसको आप positive दिखा दोगे, उससे भी non decreasing हो जाएगा. But ये question to question depend करता है. कुछ questions में this is easiest to justify, कुछ questions में this is easy to adopt. So ऐसा नहीं है कि आपने मान लो ये वाले तरीके से प्रूव करना शुरू कर दिया और बाद में आप कहीं स्टक हो गए या लास्ट में आपसे जस्टिफाई नहीं हो रहा है. That does not mean वो नॉन डिक्रीजिंग नहीं है. सो यू चूज योर मेथड केयरफुली. और कुछ एग्जांपल्स पे डेरिवेटिव वाले मेथड से प्रूव करना इजी होगा, कुछ एग्जांपल्स पे सब्ट्रैक्शन से, और कुछ एग्जांपल्स में ये रेशियो से. So this is what just clicks to you. So most of the times I always try this way first, subtraction वाला, but कई बार नहीं होता है तो हम रेशियो से भी कर सकते हैं कुछ केसेस में, right? So ये हमारा डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग वाला पार्ट था. And upper bounded bound was this way. So I can see it's now I'm getting the definition like that an is less than 3 for all n's, क्योंकि कुछ भी हो n की वैल्यू ये जो है पॉजिटिव ही रहेगा. So at least I'm still not claiming कि least upper bound है, I'm just saying it is bounded from above. an is bounded from above because it is satisfying the definition of bounded from above. So फर्दर ये क्वेश्चन तो वैसे इतना ही था क्योंकि इसमें दो ही चीजें पूछी थी, नॉन डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड फ्रॉम अबव है कि नहीं है. तो वी फिगर्ड आउट द आंसर टू बोथ ऑफ देम इज यस.
अब फर्दर अगर आप उसकी लिमिट निकालना चाहते हो, एक तो आप ये इस यहाँ पे लिख सकते हो, इट इम्प्लाइज an इज convergent by which theorem? non decreasing sequence theorem. तो आपकी नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस थ्योरम इस पे एप्लीकेबल हो गई, और उसके अकॉर्डिंग अगर बाउंडेड आ गया तो कन्वर्जेंट है, तो हमने वो लिख दिया. वैसे वो पूछा नहीं था, बट ठीक है, वी आर आंसरिंग द कन्वर्जेंस. दिस इज कन्वर्जेंट अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम. एंड एज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट थ्योरम which tells you कि अगर कन्वर्ज करेगा तो लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगा. So now the question answer arises here कि हमें कैसे, हम लिमिट कैसे निकालें. So this is simply you take this. So remember this for every question, not only for the non-decreasing one or the other type of sequence. आपको जब भी एक sequence की लिमिट निकालनी है, तो just apply simply this limit n approaches infinity an, because that's what the meaning of checking convergence and divergence is. कि अगर n बहुत बड़ा है या टर्म्स आपकी बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही हैं, सो वो कहाँ कन्वर्ज कर रही हैं, तो आपको ये निकालना है. So here for this question, if you take this as a limit, so I know this is limit n tending to infinity 3n plus 1 by n plus 1. So all of you can solve this limit. The answer will be 3. It's very easy to see. You will write 3 plus 1 by n, 1 plus 1 by n, so 3 by 1, you will get the answer 3. So actually according to that theorem, this 3 is the least upper bound. उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म एग्जैक्टली 3 नहीं होगी, स्ट्रिक्टली लेस रहेगा, बट इट विल बी लाइक लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दैट, राइट. सो इसका आप ग्राफ अगर बना के देखोगे इस सीक्वेंस का, तो इसकी टर्म्स का, देन यू विल सी कि देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट इट विल बी लाइक दिस. ऊपर 3 है, 3 से कम ही रहेंगी सारी टर्म्स. सो ये यहाँ पे भी स्टैग्नेंट नहीं हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा, बट इट विल बी एसिम्प्टोटिकली अप्रोचिंग टू 3. इट विल नेवर बी एग्जैक्टली इक्वल टू 3, 3 से कम ही रहेगा. इट इज समथिंग लाइक ऐसे टर्म्स आएंगे आपके पास 2.9, 2.99, 2.99999. सो यू नो 2.9 से लेकर 3 में भी इंफिनिटली मेनी टर्म्स होती हैं. सो वो ही वाली टर्म्स होंगी विच आर वेरी 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 क्लोज टू 3, बट दे आर नेवर एग्जैक्टली 3. तो आपकी नॉन डिक्रीजिंग नहीं वायलेट हुआ वहां पे कि वो बढ़ना कम हो गया या बंद हो गया, दैट इज स्टिल वैलिड, बट वो उसके मैग्नीट्यूड्स इतने स्मॉल हो जाते हैं, उसमें इंक्रीमेंट्स इतने स्मॉल हो जाते हैं बड़े n के लिए, दैट इट्स नियरली इक्वल टू इट्स लिमिट ओनली. सो दैट्स द कंप्लीट क्वेश्चन. या तो इसमें पूरा नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस थ्योरम हमने लगा लिया, बाउंडेड भी चेक कर लिया और उसका बाउंड भी निकाल लिया, और उसका लिमिट ऑफ सीक्वेंस